Hello and welcome to the Maharashtra Brief, where we get you all the top stories from Maharashtra and Mumbai. On the show tonight, we're looking at two stories. Firstly, of course, the India Maritime Week being inaugurated in Mumbai. This event will bring together policymakers, global leaders, and of course, industry experts when it comes to do with the maritime businesses, security of the country. The second story that we're looking at is, of course, the death of a doctor in Satara and the allegations that are coming up even now with this case that has taken place in Satara. Let's take a look at the headlines. Union Home Minister Amit Shah inaugurates the India Maritime Week 2025 in Mumbai. And a political storm over the death of a doctor in Satara with fresh allegations emerging. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the India Maritime Week in Mumbai. And of course, this is an event that's been organized by the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways. This 5-day event focuses on maritime growth, trade expansion, and also the blue economy. Now, several ministers are expected to take part in this event, and also Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra, unveiled what he calls, of course, the Maharashtra Shipbuilding Policy of 2025. My colleague Anuj Rayate reports. India Maritime Week 2025 was just inaugurated here by the Union Home Minister and the Minister for Cooperation, Mr. Amit Shah. He was accompanied by several chief ministers from states like, of course, Maharashtra, which is hosting this year's event, along with the Chief Minister of Goa, Odisha and Gujarat, three of the very crucial states when it comes to the maritime health of Indian economy. Now, in this inaugural session, one got a glimpse of what to expect in the next 5 days when this conference, this dialogue will be going ahead. As Home Minister Amit Shah said, that this is one of the biggest dialogues, one of the first of its kind that happens in the Indo-Pacific region, which in itself accounts for one of the largest trade through sea. Now, when you talk about trade through sea, even for India, that becomes a very crucial factor, because more than 90% of India's trade is with these with this particular route, and that is why such kind of dialogues gain so much of prominence. Of course, while speaking on this occasion, Chief Minister Devendra Fadnavis made a mention to the ambitious Vadhavan port, something that has been at the center of Maharashtra's maritime development. There is also a shipbuilding policy that has been put into place, which aims to increase the shipbuilding capacity of the state by multifold in the next 1 decade. And the Vadhavan port, which after its creation on the very first day of its functioning, is supposed to make itself, to make its position very clear in the top 10 ports of the world, is what was claimed by the Chief Minister of the state, Mr. Devendra Fadnavis. Amit Shah, while speaking on this occasion, of course, shed light on the importance of the multiple states which contribute to the development of the maritime climate of India. Also talked about how in the last few years, India's development in the maritime space is something that has happened at a very rapid pace. Even if you talk about the shipbuilding capacity, if you talk about the sustainability and the fact that how India is considering development of not just the region where where India is situated, but the entire global south. Many of these countries are getting affected by climate change, something that Home Minister Amit Shah said that India is viewing very, very closely. Now, what do we expect in the next 5 days? Of course, there will be dialogues that will be happening, of course, between different Indian states, but there will also be delegates coming from different countries as well. From what we know, from what the official figure states, there will be delegates coming from more than 85 countries, although Amit Shah today said that delegates from more than 100 countries are present today itself. All of them will be interacting with investors, and this entire phenomenon is basically to attract investors to Maharashtra, to India, not just from across the country, but from across the world, wherein the dialogue between the investors and the host will help the state and the country strengthen its position as a powerful maritime player for a long term here in this particular part of the world. Now moving on to our second story.
Shiv Sena UBT leader Sushma Andhare has demanded the setting up of a special investigating team to probe the death of a doctor in Satara, the tragic death of the 26-year-old doctor in Satara over allegations of rape and harassment have led to a political row with even the name of a former MP coming up. Now, also the doctor was apparently under pressure to give false medical reports, and that's something that has been articulated in the investigation as well. And also, this is something that the opposition is now also bringing up, given the kind of allegations that have surfaced. My colleague Rahul Kulkarni has more on this story. मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता है सुषमा अंधारे, वो जुड़ गई है। तो मैं तो वहाँ गया था उस होटल में। मैंने देखा है कि 1:30 बजे वो आई, उन्होंने रूम मांगी, रूम के अंदर चली गई और फिर 5 मिनट के बाद वो बाहर आई। उन्होंने कुछ बात की जो हमने रिकॉर्ड किए, लेकिन आप कह रही कि वो तो मर्डर है। मेरा साफ साफ कहना है कि एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर केस है। और ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर केस क्यों है, इसके आधार मैं कुछ बताए जा रही हूँ। एक पहली बात कि मृतक की जो बहन है, वह बहन 2 सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। एक, अगर उनकी बहन 4 पन्ने का एक पूरा लेटर अपने डिपार्टमेंट को लिख सकती है, तो क्या वह एक सुसाइडल नोट नहीं लिख सकती है? क्या सुसाइडल नोट गायब हुआ है? दूसरा, मृतक की बहन का कहना है कि हाथ पर लिखे जो हस्ताक्षर है, जो हैंडराइटिंग है, वह उनका नहीं है। मेरा तीसरा कहना है कि अगर फलटन में उनका खुद का रूम था, घर था, तो वह होटल क्यों चली गई? जो होटल है वह कोइंसिडेंटली रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर इनके ही कार्यकर्ता का होटल कैसे है? दिलीप भोसले जो अब नगर निगम के इलेक्शन में शायद नगराध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहेंगे, अगर वह डेड बॉडी वहां पर है तो उनके रिलेटिव की परमिशन के बजाय या उनके रिलेटिव वहां पहुंचे भी नहीं है। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वह डेड बॉडी वहां से जल्द तो इसका मतलब है आपका जो इशारा है वो फॉर्मर एमपी रंजीत निम्बालकर की तरफ मेरा है। रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर पर इशारा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि उनको इंक्वायरी की कक्षा में लीजिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या इनके ऊपर एफआईआर की मांग कर रही है? मैं एफआईआर की भी मांग करूंगी और मेरी मांग ये है कि कृपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। उनका काम वेलफेयर स्टेट संभालना है, वो वेलफेयर स्टेट संभाले। न्यायाधीश की कुर्सी में बैठे कोई लोग और हैं। कल जिस तरह से उन्होंने एक क्लीन चिट देने की कोशिश की है, यह इंक्वायरी करने वाले लोगों पर दबाव बनाने की एक उनकी होड़ है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि संस्थात्मक मर्डर है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें एमपी भी जुड़े हैं, इसमें पुलिस भी जुड़े हैं और शायद लगता है कि मेडिकल के जो आला अफसर है वो भी जुड़े हैं। मैं इसमें कुछ नाम ले रही हूँ। अस्पताल के जो हेड है डॉक्टर अंशुमन धुमार, डिपार्टमेंटल डीवाईएसपी है राहुल धस, उनको बार बार उनके जिले के नाम से, उनके सरनेम के नाम से, वह किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है कि आप इस फला फला कम्युनिटी से हैं, आप इस जिले से हैं, तो आप जैसे एक क्रिमिनल जिले से है तो आपको किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी और आपकी बात कोई भी ध्यान पर नहीं लेगा। यह कहकर उन्हें डिमोरलाइज करने वाले एपीआई जायपात्रे, पीएसआई पाटिल, इनको भी इस सारी इंक्वायरी की कक्षा में लेना जरूरी है। और निम्बालकर को क्यों लेना है? क्योंकि इसके पहले कलानी के आमदार पप्पू कलानी, उनके जो स्वीय सहायक थे नंद कुमार ननावरे, इन्होंने और इनकी बीवी ने एक सुसाइड किया था। उसका वीडियो मैंने आज दिखाया है और उस वीडियो में वह खुद कहते हैं कि हमारी सुसाइड को जिम्मेदार रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर है। लेकिन जब ये बात फडणवीस जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उसमें एमपी का नाम नहीं, हाँ वो नाम है रंजीत निम्बालकर का। कितना शब्द छल करेंगे और कितना शब्द छल। उसके पश्चात उनके भाई धनंजय ननावरे, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर उंगली काटकर उसका वीडियो बनाकर कहा था कि जब तक फडणवीस इसमें ध्यान नहीं देते, मैं मेरे शरीर का एक एक हिस्सा काट कर फडणवीस को देता जाऊंगा। फिर मैंने दूसरी केस यहाँ पर आपको प्रेस में दिखाई है कि दिगंबर अगावने की लड़की और उनकी बहन, दोनों जुड़वा बहनें, उन्होंने भी संपदा मुंडे की तरह ही खुदकुशी करने की कोशिश की। कुल मिला के आप कह रही हैं कि जो जितनी भी अव्यवस्था वहाँ पे है उसके लिए मिला के मैं यह कह रही हूँ कि फलटन की पुलिस स्टेशन नहीं, बल्कि एक तरह से जिसे हम
महाराष्ट्र में छल छावनियां बनाई जाती उस थी, तरीके की चल इस तरह की छल चलिए बहुत छावनी। बहुत शुक्रिया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके अब जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि निंबालकर को भी इसमें आरोपी बनाया जाए, देखते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो कि खुद मुख्यमंत्री वो क्या कहते हैं। That's all we have on the show tonight. Thank you so much for watching. For all the latest updates on the latest developments in Maharashtra and Mumbai, stay tuned to the Maharashtra Brief. For all the latest news updates from across the country and the world, keep watching NDTV. Thank you so much for watching the show.